So, hello everyone. I am Rishikesh, founder of Tayog. So today we will gather here to talk about the why are the developing and undeveloped countries are not doing good in the research. Yeah. So let's start with the intro. The Siddhan Bhaiya, let's start. Hello everyone, my name is Siddhant and I'm from Varanasi and I did my master's from Undeveloped Institute of Technology VIT, and after that I stepped out with a PhD from Taiwan, and here I'm working on fire process engineering technology. So about this topic, on what we are going to discuss is about research and innovation are the key driving of progress. This is Researchers in developing nations face unique challenges like funding limited to the global collaboration. So what it means is like there are some main challenges about the research in developed country also, and in under developing country and undeveloped country. So basically what I feel is like the limited fundings and financial resources. And second main thing is inadequate research and infrastructure and facilities, and also about the modern technology and scientific equipments. So there are other various problems also, like weak industries, academic collaborations, and insufficient like outdated policies and regulations also. So to overcome these things, government should take some good initiatives and policies, like it's also going on like NRF, National Research Foundation, and also some startups. And so one other innovation is there in that people can get the fundings from governments, and also they are providing the incubation center to the national research site. So these things are policies to be taken further. And also like what I feel is like I already worked in India, and also now I have been working in Taiwan. It's in almost 2 years. So what I feel is like the difference is here, if a newly joined professor, they can get the initial fundings to start their, it's from the government side, like NSTC projects. But in India, there are very limited universities and very limited research institute getting the seed funding. So these are the things what I feel, and we can continue with Abhinit. That's all from. Hello everyone, my name is Avneet Chaubey and I am also from Varanasi, Uttar Pradesh, and I did my master's from VIT University Vellore in computer science engineering. Right now I am pursuing my PhD in University of Queensland, IIT Delhi joint PhD program under the supervision of Dr. Sapir Singh Mukherjee. What I feel that why developing countries and in developing countries, the lack of information regarding the research, that अगर हम research को लेके जो हमारा mindset है, I'm talking about the undeveloped countries in the sector of research. So they are just doing like कि यार अच्छा ठीक है, रिसर्च को लेके फंड्स नहीं आ रहे हैं, रिसर्च को लेके ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. अभी कुछ टाइम पहले एक ऐसा भी बात हुआ था कि यार इसरो को, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री, इसरो को थोड़ा रिसर्च में जो है कि ज़्यादा फंड्स मिलने चाहिए. बट द थिंग इज कि उनके पास ऑलरेडी फंड्स हैं, दे आर शॉर्ट फ्रॉम द प्रोग्राम, है ना. दे डोंट नो द आइडियाज दैट हाउ टू डू विद दिस थिंग्स. सो इन डेवलपिंग कंट्रीज में मेरे हिसाब से कुछ प्रोग्राम्स चलाने चाहिए ऐसे, जिससे कि हम या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में भी ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे हम रिसर्च को पुश करें आगे की तरफ, है ना. ऐसे प्रोग्राम जैसे कि अभी यहाँ पे इंडिया में कोलैबोरेट करके जो अदर कंट्रीज़ के साथ हम लोग जो पीएचडी चला रहे हैं, जिसे जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम कहते हो, इस टाइप के प्रोग्राम्स कम से कम हमारे यहाँ इंडिया में तो आई थॉट 4-5 इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है अभी फ़िलहाल में. बाकी अभी अदर इंस्टीट्यूट्स ऐसा कुछ है नहीं. ऐसे कम से कम 30 to 50 इंस्टीट्यूट्स में ऐसा चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब हम अदर कंट्री से कोलैबोरेट करके अपना रिसर्च करेंगे तो हमें उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे रिसर्च का कल्चर क्या है, सारी चीज़ों को.
तो इस तरीके की चीज़ों पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से बाहर निकल के आ पाएंगे कि यार ठीक है, अच्छा रिसर्च के सेक्टर में ऐसे भी काम हो सकता है। और कोलैबोरेट करके जितना अच्छा रिसर्च कर सकते हो उतना सिंगल हैंडेड नहीं हो सकता, ये डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप फिर अपने हिसाब से बस सोचोगे, आप अपने कल्चर के हिसाब से सोचोगे। अभी अगर यूएस से किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करके आईआईटी या कोई एनआईटी या कोई ट्रिपल आईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अगर वो काम करते हैं तो डेफिनेटली हम एक अच्छा जो है कि रिसर्च प्रपोजल भी लेके आ सकते हैं, रिसर्च रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं, और रिसर्च में कहीं ना कहीं स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पे स्टक हो जाएंगे। राइट नाउ इंडिया इज ऑन दैट प्लेस कि स्टक हो चुका है हर एक चीज़। किसी को फंड्स वगैरह सब कुछ हैं, इक्विपमेंट्स सारे कुछ हैं, सब कुछ है। मैं बहुत जगह पे काम किया हूँ, मैं बिट्स में भी काम किया हूँ, मैं आईआईटी बीएचयू में भी काम किया हूँ, मैंने आईएससी बैंगलोर में भी काम किया है आनंद लुइस के अंडर में, और मैं अभी राइट नाउ आईआईटी दिल्ली में हूँ। मैंने हर जगह पे एक चीज़ कॉमन नोटिस की कि दे आर नॉट लैकिंग फ्रॉम विद द फंड्स और नॉट विद द इक्विपमेंट्स एंड ऑल, they are lacking with the that the passion, that the motivation, and the third thing is की information, वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से लैक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, कि अगर हम अदर कंट्रीज से भी नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन लोगों को आईआईटी के साथ कोलैबोरेट करके कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, जिससे कि हमारा आईआईटी के साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो आईआईटी के अंदर पे जाके वो देख सके वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। एटलीस्ट अगर हम बाहर के नहीं कर पा रहे तो इंटरनली कोलैबोरेट करके हम उस चीज़ को कर सकते। तो व्हाट आई फील दैट कि ये सोल्यूशन एक हो सकता है, इस तरीके से हम रिसर्च को जो है कि आगे बढ़ा सकते हो। आपको अब नमन बताएंगे बाकी इसकी बातें। Hey, my name is Naman, and I'm currently pursuing my PhD from University of Undeveloped. And I did my master's from Indian Institute of Science, Bangalore. And my other friend also working on field predictions, precipitation predictions, and impact of climate change over all those technological sciences. So I completely agree with what Siddhant and Abhijit has said upon the topic. But few things needs to be taken into consideration. First is the time constraint, that the age factor comes into the index when we talk about the PhDs and research. The other thing is the military issues. Like if we talk about the 40% of the GDP India is spending as compared to the other countries, like around 2.6% of the GDP China is spending, 3.4% of the GDP USA is spending, and 3.7% is spent by India. So this is a major concern to be taken into consideration. Along with this, I would like to add what Emily has added, the lack of awareness and more information needs to be provided. And there is a number of things, a number of sources from which the students will get their fundings. But since they are not aware of it, so these go into them. And getting more students into the international conferences, like there are many conferences which are happening all across the world. So more students participating and more students getting into these conferences will definitely help them to make their own ideas and get their own ideas in research. And this will definitely put the concentration in students all across the country, when specifically in India will be going up. So these all things I think need to be taken into consideration. Nice. We have completed our first topic, like challenges in the research. Let's come to the second one. So guys, what does the education system impact research output in these countries? You want to take initiative? Can you please repeat the question? Yeah, sure. What does the education system impact the research outputs in the countries? What does this say? The education system, what I felt when I was in ISC. So even my professor, when he visited ISC and IIT Madras, one of the leading universities of the country, he specifically mentioned that all the professors, like I don't want to make any sort of comment, but most of the professors have a very mini gap behind them. So
people getting into ISC and they're doing their masters. So the point is, if they're interested in doing research, then only they should be asked to do the thesis. Otherwise, they'd be asked to make 2-3 extra subjects, 2-3 extra coursework, I mean, and then they should be granted a degree with a very small course, with a very small course. IITs and 6 months in ISC Bangalore. Most of the things is they are getting into a non-core job. They are getting into coding jobs and data science on these jobs. So there is no point of like from civil engineering domain. So there is no point of these students getting into the research of civil engineering and then they are landing up with the non-core jobs. So my point is these should taken into consideration, like only these few students who are interviewed well and the professor knows that yes, this person is interested in research and further he'll be moving into the PhD and other research line. These students should be only asked to do the thesis work. And that time in India by the professor can be devoted to the PhD students so that the average time for the PhD can be reduced from 6 years or 5.5 years to 4.5 years. So these things should be taken. Abhijit? Well, definitely, I would be a really nothing. What I have also is that India में duration है the duration of PhD in science here we should reduce from like the everybody said like my UPIC they said that you have to complete your PhD in years and night portion 4 years in between that but right now so हमारे seniors जो अभी graduate they push for 6 years 5 years minimum to be required in this area in Goa. So we should take this at the reduce yes and that point is very beneficial because जितना अच्छा इतनी जल्दी से हम PhD कंप्लीट करके एक अच्छे में गुड डायरेक्ट रिजल्ट नीचे आए आउटपुट लेते हैं इतने कम टाइप ऑफ कंप्लीट PhD PR ठीक है इसको रिसर्च को और आगे कैसे भी उनका फर्क जा रहा है या रिसर्च निकालना चाह रहा है या वो तो नहीं थी तो वो अपना वो कर सकते बट होता क्या है कि एक 7 years 6 years हाँ इंडिया में तो PhD का लगता है तो उसके साथ साथ देने के बाद इनके दिमाग होता है कि यार होते तो पसंद बच्चों बाबत और उसके आगे नहीं पत्नी बट तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का साफ होगा और दूसरा चीज ये जो है इन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे एक ऐसा करिकुलम चला है ऑल ओवर द इंस्टीट्यूट नॉट इन IIT में भी सारे इक्विपमेंट या जो है वो तो ऐसे जो है कि पोस्ट चलाया जाए करिकुलम को रिसर्च को लिए इनके अंदर एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ राइट यार he doesn't set the technology it for the option but he can piece of the optic hack but had they but did with ticker hadi and one type of point that you required the 6-5% needed be copies but they have this practice group at the look like near as well the mac it had out so you'll be kind of thing 3-4 kora word यार 0% लेकिन वो अपनी पूरे तरीके ठीक नहीं ऐसे कभी सुपर रीज़न है क्या है इनको वो ग्रेजुएशन होती है तो भाई पढ़ाई वो हमारी पढ़ाई होती है पॉज होने पर राइट यार जॉब लगता है पता है बट कहीं ना कहीं हमें ये भी शुरू करना पड़ेगा कि वो है इट्स करिकुलम एंड एंड करना पड़ेगा जो कि रिसर्च एग्जिस्ट जनरेट करनी होती reporting with that and to add and this like to the up will take top the deep mouth up is that's a good or even though not in Delhi अभी class it's way was to be either पढ़ाई जाना है already certain the right we see and not in dictate we see वो वहाँ पे हफ्ता एक रात अगर हम सिख even parents and staff that the facility अभी एक छोटा था वो साइड से लिया सीरियसली था क्या रिसर्च को ऐसे शॉप एट दैट अभी नाम क्या आते
एक जब हमारे यहाँ बेसिक वो तैयार रहेगा ना बेसिक, कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा कर पाएंगे, सही पड़े यूरोपियन भी इसलिए 7 साल का होता है, इसमें तो नहीं खा कहीं ना कहीं वन हाथ ही आता है। और हमारे रिसर्च की क्वालिटी और उसको भी वही कर पाएगी। और साथ ही साथ वो लैक ऑफ प्रोग्राम्स इंडिया पर इसको बेहतर हम तब तक के प्रोग्राम भी देखा पाए कि आई हुआ ये पॉइंट हमारे तो क्वालिटी पॉकेट और वो रेडी तक हो। And these are your point upon the idea is still is to get out the practicing basin for it. Good thing. Chandan with that. So, I agree with what he mentioned and also Naman. And they were talking about like the PhD duration and also the basic teaching about the like from the up to the students like about the research and to the need the interest in the students. So मुझे क्या लगता है कि जैसे अभी इन्होंने मेंशन किया कि इंडिया में 5 से 6 साल लग जाते हैं हमें PhD करने, और अगर फॉरेन का हम कंपेयर करें या फिर डेवलप्ड कंट्री का हम कंपेयर, इट्स ऑल अबाउट जो कि रिसर्च कल्चरल डिफरेंस है। और जो मैं देख रहा हूँ अभी तक इनका ये है कि ये रिसर्च से बिजनेस पे फोकस रहना है, लेकिन हमें जो मैं जानता अगर मुझे लगता है कि इंडिया में हमें कोर्स ही मैनेज करने हैं, हमें प्रोफेसर्स के जो क्लासेस होते हैं उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना है, और फिर उसके बाद जो मेन फोकस है हमारा रिसर्च उससे हटके और भी करने देते हैं फिर, जिससे मुझे लगता है कि वो 5 साल एक्स्ट्रा लगते हैं। और ऐसे PhD आप सिर्फ रिसर्च काम करेंगे तो आपको कम ड्यूरेशन लगेगा, और एकदम आप बेस से लेके एकदम किसी भी चीज़ को उसके प्रॉपर थॉट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि अभी कितने बोला कि हमें जैसे कुछ भी प्रोग्राम चल रहे हैं कि जो कि स्टूडेंट्स को क्लास 9 से ही या फिर इस तरीके खाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। जो मुझे लगता है कि इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हैं तो कि इंडिया सिस्टम में अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि हम इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट वो साइंस भी पढ़ सकते हैं और साइंस के स्टूडेंट को बायोलॉजी मैथ्स अलग अलग, तो इससे हम अपना जो नॉलेज है वो शेयर कर सकते हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, कितनी अच्छी है। और तीसरा मुझे यह लगता है कि तो इन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क में हम ये कर सकते, जैसा विनीत ने बोला कि कोलैबोरेटिव वर्क अगर पॉसिबल नहीं है अगर फॉरेन में, तो एटलीस्ट हम इंडिया में कोलैबोरेटिव वर्क कर सकते हैं। तो IIC IITs जहाँ पे टेक्नोलॉजी तब्दील है, और चूँकि स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं जो हमारे स्टूडेंट्स सफ़र करते हैं वो उन्हें चीज़ मिले और वो जाके वहाँ पे सीखेंगे, और सेम जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ट्रीट करके उनके एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर सकते हैं स्टेपों के साथ। Sure. So let's come to our next topic. What role do international collaboration play in addressing these challenges? On now. Any repeat? What's that? Yeah, sure. What role do international collaboration play in addressing these challenges? In that aspect, anybody want? No, Siddharth. Want to say that? Is word. What I feel is like international collaboration is play like a critical role for the research challenges faced by the developed and undeveloped countries, like to share the capacity building and the knowledge transfer. For example, like there are many collaborative works is going on, like there is one example like project between African universities and Europe Institute have significant improved agriculture research also. And also if we go for the collaborative works, we can reduce the problems of fundings and resources. Like we can exchange the students from our country to the foreign country or from our institute to another institute, so that we can manage the funding things and resource. And also we can improve the publication quality with this collaborative works. Okay. Yes. Anybody wants to add? Definitely. I agree with the past one.
what I feel that I already said to all of that the collaboration very important in the reduce the that the lack of funds and all and the lack of fellowship and all. And let's look at the example of mine. Because I am a collaborator, I have a PhD of collaboration with IT that that. My project is blockade recent devices. It is only very beneficial for India and as well as Australia, right? So collaboration का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, साथ ही साथ बहुत ही बेनिफिशियल होता है इस अपनी कंट्री के लिए भी है, इंडिया के लिए भी है और वो उनकी कंट्री। कोलैबोरेशन में जो बच्चे PhD करते हैं उनको एक साल तक जो वो एनवायरमेंट वाज पाओ अदर कंट्री के, जब वो जाते हैं वहाँ पे स्टे करते हैं, वहाँ के बच्चों से मिलते हैं, वहाँ के सक्षम मिलते हैं, वहाँ के रिसर्च कल्चर के पहुँचते यार कहाँ पे क्या हम IIT दिल्ली तो क्या हम लैब एंड यहाँ पर हम जस्ट सीख राइट, यहाँ पे किस चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ को हमारा क्या था, वो चीज़ें कई जगह हमें डिस्कस समझ में आने में, तो हमारा जो है कि माइंड सेट डेवलप करता है उस पीक अप। तो कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक पॉइंट बोला था पहले, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो नहीं कर पा रहे किसी वजह की, तो हम इनसाइड इंडिया हम अदर इंस्टीट्यूट और कोलैबोरेशन होता तो इट इज नॉट लाइक दैट यार हम IIT या हम ISC है तो हम किसी और इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट नहीं कर सकते, बट वी हैव अ रेपुटेशन, ऑफ कोर्स वी हैव अ रेपुटेशन, बट द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा रेपुटेशन से हट विथ हैपन। अगर हम इंडिया में रिसर्च प्रमोट करना चाहते हैं एक नेक्स्ट लेवल, है ना, लाइक कि हम आने वाले 30 ईयर्स नॉट 10 ईयर्स 30 ईयर्स में हम कम से कम एटलीस्ट इजराइल के बराबर हो जाए सर, या जर्मनी के थोड़ा बहुत कम, तो हमें थोड़ा सा एकदम देखना पड़ेगा, हमें से रेसिफिकेशन हमें ये देखना पड़ेगा कि यार उस एक इसकी पर हम कोलैबोरेट करके वहाँ पे तो अच्छे हैं उनको यहाँ ला के पढ़ा सकते हैं, यहाँ के बच्चे को उनको वहाँ भेज सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो कल्चर काफी व्यवस्था बन पाता है। हमारे एरिया में भी अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग स्ट्रक्चर, सपोज IIT हैदराबाद पे डिफरेंट कल्चर रिसर्च आई वो IIT दिल्ली नमन का भी अपना एक्सपीरियंस ISC का तो उनका वहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, ये तक ठीक है, तो वो कहने देख हम कोलैबोरेट करते अच्छा जो है कि आउटपुट, तो कोलैबोरेशन इज वेरी फॉर इंटरनेशनल लेवल वेरी, बट यू शुड स्टार्ट विद द इंटर इंडिया। अभी IIT स्टेट्स और IIT गुवाहाटी का ये कोलैबोरेशन वाला PhD सब था, ठीक, मेरे माइंड में अभी आया कि मैंने वहाँ पे काम करा हुआ है, तो देयर इज अ प्रोफेसर डॉक्टर फफी है, और वहाँ पे वो पता चला था कि IIT गुवाहाटी का IIT से कोलैबोरेट, तो IIT कोलैबोरेट करने, बट व्हाट आई खुद दैट कि हमें IIT नहीं एटलीस्ट NIT society certain is a private institutes for like which learning like the equivalent at the South Institute and the right, we have to collaborate at that time, so that is very good. Our this bas na ba we talk and points raised by the two. I just wanted to like feel the bodies that each and every student in India cannot make it to IIT or NITs or ISC. So it's important to like deal with IIT should deal with the state universities, while that not of I see like they are not competing that way and in research, so that no students can come out of it then and go into the conference, and they should like the confidence level in which they are lacking behind. They can face the international students learn a lot. I have been in Indian research culture and right now I'm in British research culture. There's a drastic change in the book. I think that's why I can defend, like at the last minute meeting and we were discussing, I can exactly defend why in IITs or IIS or in India in Undeveloped Stanford, why students are taking around 6-7 years and why in US it's around 4.5 years. So there is huge difference. So in IITs, one of the professors from IIT Bombay, her name is Advita Mandan, she gave a guest lecture in IIS Bangalore. So she basically described what are the roles and what are the duties the IITs professor are discharging when they get into IITs. So it's more of an administrative job
and less of the teaching and research job. So 50%, 60% is an excellent for administrative work. So the professor is spending more and more time in that. International collaborations will help to make the speedy movement of the research. Research bring up with more ideas, and says many researchers will be there in the way. So it will be helpful to make shortcuts and to deal with the collaborative work together. So what I'm thinking is the international collaboration generally involves very useful in improving the scientific education and knowledge dissemination by providing broadband connectivity of institutions or universities in India to the international libraries. Because if we look at the IITs and IICs library, they are with good amount of books and good amount of journals. But this is the case with very few IITs. We can count in within on our fingers that only these universities have a very good library, established library. Rest all of them are not. So once we have a good collaboration with all these universities, inter IITs, tetra IITs, all these things should be taken. So we will find that along with the international collaboration, domestic collaboration should also be there to boost up the representation of these universities in the international forum. Okay, boss. So this come to our next question. So there are any successful example of research initiative in developing countries? There have been no. If we talk about the PMRF, Prime Minister Research Fellowship in India, that has attracted many students. Last in, I think I remember in 2018 or 2019 when I was preparing for the GATE exam, the central government decided that they will stop the stipend for the MTech students. And there was a huge astonishment between the students. Like those students who were like, if we don't get into a PSU after writing a GATE, our future is a bit secured in IITs. If we take an admission over there, at least we can get 12,400 in a pocket. We can pay the fees and we can like make our own expenses using that stipend. But once the government stopped that, like they made the decision, but later on they withdraw it. So it was a huge astonishment. People stopped preparing for the GATE. So all these things the government is funding. So they have to like attract these students by giving more money for the international collaborations, for the international conferences, and the schemes like PMRF, what the Prime Minister Modi and his government has started. All these things should be increased so that more students can get attracted, and there should be a good competition and well research culture in the country. Here, lastly, Abhijit, do you want to add? I think you're muted right now. But I agree that EMR is politically very attractive. That kind of like right now in India, I want to place in IHP. There is one guy who is present there 2-3 years in this whole like every and PhD and world. So take as the actual map there like the you EMR pada seems what a EMR you be pocket salary correct like 7 only, right? So इसलिए जो पीछा हुआ काम करा IIT भी से उसका EMR की रहता है, right? तो उसको वो मिला. अब उसमें भी क्या होता है कि PMR आपको 1 साल का कोर्स मत करना हो. एक बहुत एक like that 1 साल का आपको कोर्स मत करना होगा. आपको you have to maintain a kind of CPA like 8 to 9 CPA and all those three. वो maintain करोगे तो after you will get this PMR scholarship. इसके बाद आपके अभी पेशेंट्स वगैरह जाते हैं. बहुत सारी बात को बहुत कम वक्त में मिल पाता है. आई थिंक हमको लगता है मुझे लगता है कि ये टाइम मैं आप इस बच्चों को सीधा जी सहमत है. तो प्रोफेसर आई उनके अंदर कोई लड़की को उसको इमारत मिला था, बाकी किसी को किया मत. तो व्हाट आई थिंक दैट ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना. बस एक कुछ भी नहीं ऐसा भी नहीं होना. लाइक एटलीस्ट दी पीपल गेट दैट, राइट?
यार हम कम से कम 2 चीज़ तो करे हैं, तो जब ये चीज़ करें क्योंकि रिसर्च की तरफ बस का एक है तो वो की तरफ इंटरेस्ट दिखाए तो लोग आधा है बस कोई नहीं कहता था पीपल तो आप कोई लैक ऑफ फंड सकता है रिसर्च नहीं है, कई लोग आकर कई लोग खास पकड़ना है। अभी आपका जो यूनियन सेक्टर अटेंडिंग यहाँ पे आई थिंक आज भी 6,000 रुपये जो नॉन गेट और नॉन टेट पर 6,000 रुपये आज की है। तो इस तरीके की चीज़ों पर थिंक करना फिर हमारे विद किसी बट 78,000 सब्जेक्ट अमाउंट तो हमें एटलीस्ट एक इंस्टीट्यूट फेलोशिप स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि नॉन गेट नॉन नेट वाले उसको इस तरफ सकती है एटलीस्ट नहीं 30,000 ऐसी you need get around 30,000 at every public. So this for the January, in instead of option, up to come 4-5 students apart from PR. As I start talking with it, we get But I on the what? Here, guys, what? Photos. Let's come to the our last point of our discussion. Even some people have covered this point. So, what can be done at the grassroots level to improve the research output in these results? The grassroots level, we should start with that कि जैसे कि IIT के बच्चों को भी बस एक रिसर्च में जैसे IIT ने बहुत अच्छा काम करा है रिसर्च में, IST के बच्चे ने बहुत अच्छा काम करा है। हमें इंडिया के हर एक बच्चे की कनेक्ट करना पड़ेगा जो रिसर्च की इंटरेस्टेड है, राइट? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट वो आर इंटरेस्टेड फॉर रिसर्च, उनको हम पकड़ें, उनको हम ग्रासरूट लेवल पर उनको तैयार करें। रिसर्च करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट भी पता है, नॉलेज भी बहुत अच्छी आती है, बट पता नहीं कैसे रिसर्च करना, राइट? तो ग्रासरूट लेवल पे वी शुड स्टार्ट टू कनेक्ट एवरीवन, नॉट फ्रॉम IIT या NIT। हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के नहीं तो बच्चे उनको भी एटलीस्ट जो कुछ बच्चे जो इंटरेस्टेड है रिसर्च उनको भी उठाना चाहिए। फ्री हम IITs में हैं तो हमें पता है कि यार ठीक है कैसे काम होता है, हमें नॉलेज है, हमारी सारी ठीक, हमको लैब का भी पता है सारी। बट जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बच्चा जो पढ़ रहा है इसको नहीं पता है, राइट? वो इंटरेस्टेड है, हाईली इंटरेस्टेड, उसको नहीं पता है कैसे काम, तो हमको उनको भी जो है कि जो है इम्पेयर करना चाहिए। साथ ही साथ प्रोफेसर्स को भी एक तरीके से जो अभी नहन ने पॉइंट बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन काम पे ज़्यादा वो बस की कठिन पड़ा जाता है, एंड दैट इज़ वेरी राइट बिकॉज मैं खुद इसको अभी टेस्ट कर रहा हूँ राइट नाउ। आई वांट टू मीट विद माय ऑन द लास्ट थिंग एंड स्टिल ये उसने अभी तक मेरे क्लियर। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जो है वो हमें इस चीज़ों में इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर्स को भी एक सेमिनार की बहुत ज़रूरत है, सो उनको ये बताया जाए बच्चे क्या फील करते हैं, राइट? नॉट फ्रॉम IIT, स्टिल अगेन आई एम सेइंग नॉट फ्रॉम IIT कंट्री, हमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के भी प्रोफेसर्स को एक सेमिनार बने, इनको ये बताना चाहिए कि बच्चे क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, वो एक राइट ट्रैक में नहीं पाते। 1.5 years से बच्चों तक यही पोस्ट पर इधर उधर बाद में शाम सुबह क्लास है, दोपहर में क्लास है, इवनिंग क्लास है, ये प्रोजेक्ट पर ये लैब अटैक करना है, वो लैब अटैक वो एग्जाम सारी चीज़ चलती है। पर जो PhD करने आया है एटलीस्ट हमें उसको डायरेक्ट से स्टार्ट करता है नहीं देता, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक स्टेप होगा हमारे। और तीसरा ये तो एडमिनिस्ट्रेशन वो तो ये है IIT से रिसर्च होता है, मिनिस्टर करते हैं, उनको भी एटलीस्ट रिसर्च के लिए बच्ची को जो है कि अलग से सेमिनार वगैरह कराना चाहिए, प्रोफेसर्स को जो है कि एक अल्टीमेटम देना चाहिए कि यार आपको इसके साथ बने जब ऊपर से प्रेशर आए दे विल डू, डेफिनेटली दे विल डू, एंड इन अ गुड मैन, नॉट लाइक कि यार अभी ऊपर से प्रेशर है इसके तक शुरू नहीं है, दे विल डू इन अ गुड मैन, वो ऊपर से प्रेशर है। तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट और प्रोफेसर तीनों को एक साथ ग्रासरूट लेवल पे सेमिनार कर ये चीज़ बता देनी बहुत ज़रूरत कि राइट नाउ कि वो रिसर्च में हम किससे आ जाए, तब पेपर पढ़ता है टाइम सब यानी द पार्ट टाइम
और everybody said, अरे यार इंडिया के साथ बहुत कुछ, अरे यार आप तो आप अभी तक चंद्रयान भी कर रहे हैं, चंद्रयान भी तक लगे हुए हैं वहाँ पे, चाइना से बात करने से ज़्यादा बढ़नी है। राइट, ये तीन सबसे ग्रासरूट लेवल, मैंने बहुत से सेमिनार्स देखो, बहुत छोटे छोटे पढ़े वाराणसी का, सो मैंने कहीं ना कहीं टेस्ट किया उस सीट से कि यार क्या बच्चे कहाँ पर लैक कहाँ पर। Yes, next. Siddhant, do you want to add? Yeah, good point. Like for the how we can enhance the grassroots level for the research. So what we need said is really a valid point, and I also want to add some points like strengthening the local education by providing trainings not just to the students, हम professors को, हम students को, हम researcher और as well as जो administrative है उनको साथ में लेके हम सेमिनार, वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं वो करके हम उन्हें ये बता सकते हैं कि कैसे हमें रिसर्च कल्चर को चेंज करना है या फिर क्या जो हमारी लैकिंग है उसे हम कैसे कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो अभिनीत ने मेंशन किया। ऑल्सो encouraging young talent like to promote the STEM education. STEM education, like we can promote the science, engineering and mathematics to build the from an early age we can create a strong foundation for the future researchers, and also we can just the entrepreneurial research by providing funds, and also we can give some like infrastructure exchanges to the students with colleges, like we have already mentioned about the collaborative works. तो ये सब चीज़ें हैं, या फिर स्टार्टअप्स के लिए हम एक पेशेंट सपोर्ट के सब होते हैं, तो उनके लिए हम ये करके अपना जो ग्रासरूट लेवल है हम इनहेंस कर काफ़ी तकलीफ। Namat, do you want to add? Yes, I have written some points like for the better collaboration we were discussing before. So even for the more budget allocation, so that none of the university should be basically be lack of budgets, and if they prepare postdoc, we can order a new one within the given time period. And one more thing, like what I was mentioning before, the students who are doing the research in the core jobs are getting into their non-core jobs on data science. So one of the professor, currently director of IIT Madras, Professor V. Kamakoti, he mentioned that this is for people that wasted of resources. If these students on the core jobs on civil mechanical and electrical engineering are getting into our core jobs, this is completely wasted of time and resources. Along with including more of innovation and funding for the collaborations and for the funding, so that students can generate and create new ideas and getting into more. If you look at the innovation index, right now they have included the NIRF ranking. So in most of the ranking system, we will see that only the top IITs and IISc are getting into the best tracks, other are lacking behind. And instead of looking at the score, I will suggest instead of looking at the rank, I will suggest look at the score. Because if you look at the example, if you look at the university ranking, so ISC is given an 83.4 out of 100, and JNU is given 69.2. JNU is second. So instead of looking at the rank, people will be very happy that it's second university of the country. But look at the score, what it's getting. So we have to take into consideration. And we should include, the university should include the weekly seminars from the professors of IITs and IISc, from the industrialists, and for also from the startup people, so that they could motivate the people into the startup entrepreneurship, professorship, like research line, and give them landing to industry sometime. So that if we consider all these things, I think at the grassroots level, I think the research level will keep on happening here and developing in different countries. Yes. That's point. So